Hello students, I'm Amrind. Welcome you to this online English class. Today I will tell you line by line expression of this chapter. I hope you have seen the video what I sent yesterday, and I think this line by line explanation will be helpful to understand this chapter. First, deep water. First we know about the author. Just I told you, William Douglas. It is written by William Orville Douglas. His full name William Orville Douglas. Was born in Maine, Minnesota. After graduating with a Bachelor of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. He must He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. Douglas was a leading advocate of individual rights. He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest service justice in the history of the court. The following excerpt is taken from Of Men and Mountain. This story is a real is a experience, is a biographical experience. It has been taken off Men and Mountains by William Douglas. या इनकी एक बुक थी ऑफ मेन एंड माउंटेन, उसी से थोड़ा सा ये भाग एग्जैप्ट मतलब होता है अंश, कुछ पार्ट होते हैं. इट हैज बीन टेकन फ्रॉम ऑफ मेन एंड माउंटेन्स. It reveals how a young boy, William Douglas, nearly drowned in a swimming pool. In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcome it. इन दिस एग्जैप्ट ये बताया गया कि किस तरह से वो बचपन में उनका जो डर था, किस तरह से जो विलियम डगलस का था, किस तरह एक बार स्विमिंग पूल में गए थे, पूरी तरह से लगभग डूब ही चुके थे और उसी समय से वह पानी से डरने लगे. और फिर बता कि वह बात करते हैं इन दिस चैप्टर ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर, किस तरह से पानी से डरते हैं और उस डर को फाइनली ओवरकम इट, यानी किस तरह काबू पाते हैं. दिस इज the autobiographical parts of the section to support discussion of here. So first we know about the author. डगलस एक बहुत ही लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स थे. वह सुप्रीम कोर्ट में जज भी थे यूएसए में. इन 1975 रिटायर्ड हुए. फिर लगभग 36 ईयर तक वे लॉन्गेस्ट सर्विस जस्टिस रहे कोर्ट में. और फिर उसके बाद उनको लिखने का भी शौक था. आफ्टर दैट उन्होंने लिखना शुरू किया. सो लेट्स स्टार्ट लाइन बाय लाइन दिस चैप्टर. इट हैपेंड when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. The Yakima River was treacherous. Mother continuously warned against it and kept fresh in mind and details of his drawing in the river. But the YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. So, in the first paragraph, the narrator narrates his experience. When he was 10 or 11 years old, he had decided to learn to swim, and that's why he joined a pool. He joined the YMCA pool. YMCA means Young Men's Christian Association in Yakima that offered exactly the opportunity. मीन्स कह सकते जब नाइटर 10 और 11 years old थे, on that time he decided to learn to swim. That's why he joined YMCA swimming pool.
बट ही डिड नॉट गो टू याकिमा रिवर। देवा की याकिमा रिवर वो नहीं जा रहे थे बिकॉज इट वॉज अ ट्रेचरस। ट्रेचरस मीन्स डेंजरस बिकॉज हिज मदर कंटिन्यूसली वॉर्ड अगेंस्ट इट। जो उनकी मदर थी हमेशा इसके अगेंस्ट वार्न किया करती थी कि डोंट गो देयर बिकॉज दिस इज वेरी डेंजरस। whoever went there who never come back. That's why he always warned against it and kept his in mind details of it drawing it in the river. यही उनका डर था कि अगर जाएंगे पानी से डूब जाएंगे। That's why, but the YMCA pool was safe, but he knew that it was safe for him क्योंकि वह yeah, just I told you that it was an opportunity for him YMCA pool because it was safe. It was safe, but William's mother, narrator's mother, would warn him not to go near the Yakima River and would discuss the various incidents of drawing. He felt that pool at YMCA was safer. The shallow area of the pool was only 2 or 3 feet deep, while the deep area was 9 feet in depth. The slope from the shallow area to deep area was not steep. He got a pair of water, just I told you this, 9 feet deep, and the drop was gradual. I got a pair of water wings and went to the pool. I had to walk neck into it and saw my skinny legs, but I subdued my pride and did it. Subdued means overcome. Now you can say that here subdued, overcome, or pride means self respect. He got 2 water wings to prevent drawing. उन्होंने 2 water wings ले लिया जिससे उन्हें डर खत्म हो जाए कि डूबेंगे नहीं, वो डूबेंगे नहीं। बट जब उन्होंने पहना, he did not like wear the swimming costume which exposed his thin legs but it was keen to swim. He gave up his self-respect and for it. Means that now just I told you that कि वो पहनना तो नहीं चाहते थे क्योंकि वो चिपका हुआ था, उनके जो पतले लेग्स थे वो नेक्ड नफरत करते थे। दैट्स वाई वो उसको पढ़ना नहीं चाहते थे, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखा और उस पर ओवरकम मैंने जस्ट उन्होंने पहन लिया। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन अवर्जन to the water when I was in it. This started when I was 3 or 4 years old and father took me to beach in California. He and I stood together in the surf. I hung onto him. Yet the waves knocked me down, the swept over me. I was buried in water. My breath was gone. I was frightened. Father laughed. But there terror in my heart at the overpowering force of waves. So this chapter, this passage will be most important. In last video, someone asked me कि सर इस चैप्टर में फियर कैसे आया उनको। फियर आपने 11th में बताया थे कि अटैचमेंट होता है, डिजायर होती है, बट यहाँ पे उनका डर का रीजन क्या होता है। सो इन दिस पैराग्राफ इट विल बी क्लियर कि वाई इज अ वेनिंग। सो narrator said that in this paragraph he had always disliked water because he recalls अपने एक एक्सपीरियंस को, ओल्ड एक्सपीरियंस को रिकॉल करते हैं कि व्हेन ही वाज 3 or 4 years old he went to the beach in California with his father. They stood as a wave lapped towards them. William stuck to his father to save himself, but the strong wave threw him down and he was covered in water. He was scared as he could not breathe. His father laughed and tried to make him feel comfortable, but the little child was scared when he realized that the wave was so powerful. सो जस्ट नाउ ये देख बताया कि जब वो 3 या 4 साल के थे तो अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया बीच पे गए थे, जहाँ पे पापा ने उनको पानी में फेंक दिया। वहाँ पे किस तरह से एक स्ट्रांग वेव आती है और जो उनको कवर कर लेती है और लगभग उनकी सांसें फूल जाती हैं, डूब जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं तो गया, लेकिन पापा उनके हंस रहे थे और ट्राई कर रहे थे कंफर्ट फील करने के लिए उनको। या लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पैराग्राफ। My introducing to the YMCA swimming pool revive unpleasant memories and steer childish fear.
childish pains, childhood fear. But in a little while, I gathered confidence. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by apping them. I did not this 2 or 3 times on different day and was just beginning to fit it in case in the water when the misadventure happened. Misadventure means bad happening. What's a bad happening? So he recalls that when he joined the swimming pool at the YMCA, the fill of water surfaced in his mind. But he confident by watching other boys swimming and try to copy them. He had done this twice or thrice a different occasion and had started gaining confidence when the incident happened. He had a narrow escape from death. So बता रहे इंट्रोडक्शन किस तरह से मैं वाई एम सी ए पुल जो डर तो मेरा बचपन से वहाँ पे था बिकॉज मम्मा ने भी मुझे हमेशा अगेंस्ट इसके वार्न किया करता था कि हाँ बहुत इसकी बुरी कहानी है जो भी यहाँ जाता है डूब के चला आता है डूब जाता है आता नहीं है बट अदर बच्चों को देख करके दिस आल्सो विश टू होता है कि मैं भी तैरूँ बच्चों को देख करके सो दैट्स वाई आई गेदर कॉन्फिडेंस मैंने कॉन्फिडेंस गेदर किया और फिर अपने न्यू वाटर विंग्स को मैंने पहना और फिर देख करके मैंने ऐसा शुरू किया दिन में 2 बार 3 बार लेकिन जब मेरे साथ एक बार उसी पुल पे एक मिस एडवेंचर हुआ मिस एडवेंचर मीन्स बैड हैपनिंग कोई बुरा चीज़ हुआ क्या हुआ लेट अस सी दैट आई वेंट टू द पुल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर द प्लेस वाज क्वाइट द वाटर वाज स्टिल and tiled bottom was as white as clean as butter. I was timid. Timid means was covered drip, about going to alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. So here in this passage, narrator जो होते हैं सीखने के लिए उस पुल पे पहुंचते हैं बट नो वन वाज देयर कोई वहाँ पे नहीं था पूरी तरह से वह जगह खाली थी बट पानी भरा हुआ था दैट्स वाई ही सेट ऑन द एज वेटिंग फॉर अदर बॉयज to arrive. He was afraid to swim all alone in a pool. As the swimming pool was empty, William, who is narrator, could see the bottom also. It had white colored tiles on it and looked white and clean like a bathtub. मीन्स वहाँ पे जाते हैं देखते हैं जगह खाली होती है पानी भरा होता है कोई नहीं होता है चूँकि अभी मैंने बताया कि ही वॉज टिमिड टिमिड मीन्स कवर्ड डरपोक थोड़ा सा डरे हुए थे दैट्स वाई ही डिड नॉट डेयर टू गो इनटू द वाटर दैट्स वाई ही शुड वेट देयर वहाँ पे इंतज़ार किया कोई और आ जाए बट व्हाट हैपेंड इन नेक्स्ट लेट अस सी दैट आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रिजर मीन्स मसल्स कह सकते हो कि बहुत पहलवान टाइप आदमी मसल्स हुआ of a boy, probably 18 years old. Physical specimen with legs and arms and short ripping muscles. He yelled, "Hi, skinny, how would you like to be chapped?" Means in this paragraph, he described about this. It had not been long when he had been sitting by the pool, and meanwhile, when a boy arrived, he was around 18 years of age, had a well built body, rippling muscles. He seemed to be a bully. He asked He asked him he wanted to be thrown into this pool. मीन्स जैसे वो इंतजार कर रहे थे एक बड़ा मसल सा लड़का आया वहाँ पे और उनसे बोला हे स्किनी किस तरह से उसमें गोते लगाना चाहोगे सो नेक्स्ट पैराग्राफ विद दैट ही picked me up and tossed me into deep end. He landed in a sitting position, swallowed water, and went at once to the bottom. I was frightened, but not yet frightened out my wits. On the way down, I planned when my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it, and paddle to the edge of the pool.
So, means here it had, let us see the summary of the paragraph. I had not been there long when I came a big brother. That's now here. With that, the browser man, the boy who was 18 years old, he picked me up and tossed me into the deep end. I landed in a sitting position, swallowed water, and went at once to the bottom. I was frightened, but not yet frightened, out of my wits on the way I planned. When my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on, and it pedal edge of the pool. Means बोलते हैं कि जब मैं मेरे को नीचे फेंक दिया, मैं सिटिंग पोजीशन में नीचे जाने लगा तो डर गया था, लेकिन आई मैंने प्लान किया कि मुझे पता था कि कोई भी नीचे जाती है कोई चीज़ पानी में तो बहुत ही ऊपर उछल करके आती है. सो आल्सो आई प्लान, मैंने भी एक प्लान बनाया. क्या प्लान था कि व्हेन माई फीट द बॉटम, जब मेरी फीट बॉटम से टकराएगी, आई विल मेक अ बिग जंप, यानी पूरी तरह से मैं एक जंप लूँगा और फिर मैं ऊपर सरफेस पे आ जाऊँगा और टलने लगूँगा और फिर मैं किनारे आ जाऊँगा. Okay, next. It seemed a long way down. Those 9 feet were more like 90. And before I touched bottom, my lungs were ready to burst. But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. I imagined I would bob to the surface like a car. Instead, I came up slowly. I opened my eyes and saw nothing but water. Yeah, it seemed a long way down. Those 9 feet were deep like 90. Means it just took a long time to reach the bottom, the pool. It seemed that the depth was 90 feet instead of 9 feet. I touched bottom like, just I told you that. He could not hold in breath and felt as if his lungs would burst. When his feet touched the bottom of the pool, he gathered all his strength and jumped upwards. He had thought that next moment he would come out of the pool. But the opposite happens. His movement upwards was slow, and when he opened his eyes, he saw water all around was yellowish color. He got scared and tried to grab something, a rope which would help him reach the edge. वो देखिए ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा तो 90 फीट था, फट गया मैं, लेकिन फिर जिस तरह से मैं ऊपर आया, जब मेरी आंखें खुली तो अपने आप को मैं वहाँ पाया. पूरी तरह से डर्टी येलो थिंग्स टू डू इट, पूरी तरह से गंदे पानी थे. आई ग्रीव पेन की, मैं पूरी तरह से डर गया था. ग्रीव पेन की मतलब घबराहट. आई रीच अप टू एस ग्रैब एज अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच. ऐसा लग रहा था कि मैं पानी में पूरी तरह से जकड़ गया हूँ, पानी ने मुझे रस्सी की तरह बांध रखा हो. आई वॉज सफोकेटिंग. Suffocating means suffocating means unable to breathe due to lack of air. सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी. जिस तरह आजकल मास्क लगा लो, थोड़ी देर बाद सफोकेशन शुरू हो जा रही है. तो आई ट्राई टू एल, चिल्लाने की कोशिश भी करी. एल एल में स्क्रीम, चिल्लाने की कोशिश करी, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई आवाज़ बाहर नहीं आया. देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर. थोड़ी देर मेरा नाक और आँख बाहर आया, बट नॉट, मेरा मुंह नीचे अभी तक नहीं आया. ओके.